Aashiqui 3 is coming. Karthik and Fatima have been finalized. So do you think they can do that same magic as you and Shraddha ma'am have done on screen? No, why not? Yeah, but it's been Karthik and Fatima, is it? Yeah. Yeah, no, for sure. I mean, when I first heard of it, I think people asked me if I wanted to be a part of it, but the second part I took a long swim, you know, at the end of the film. So I don't think that character can can return for a sequel. I think the team that they're putting together, from whatever I'm hearing, is a great team, and I'm really looking forward as a film watcher to see what they do with the next part. I'm sure they'll do a great job. Yeah. सारे आपके दोस्त हैं, काफ़ी करीबी दोस्त हैं, सो काफ़ी जो आपके करीबी दोस्त हैं काफ़ी सुपरस्टार भी हैं और सभी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं. एंड यहाँ पर पूरी टीम आपकी सारी बहुत ही अच्छी है नाइट मैनेजर की. तो सबसे ज़्यादा आप ट्रस्ट आँख मूंद कर किसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं? किस सिलसिले में? कुछ भी वो आप बताएंगे. मतलब काम में एंड आपके दोस्ती में. एंड तो इस वक्त क्या मतलब काम के बारे में कहूँ, दोस्ती के बारे में कहूँ, किसके बारे में? कुछ भी आप बोल सकते हैं. दोस्ती के बारे में बोल सकते हैं, काम के बारे में बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं. एक चीज़ जावेद साहब ने कही है हमेशा, और मैं सबसे कहता हूँ ये, विच मेरे जहन में रही वो बात, जावेद अख्तर साहब के, और ऋषिता भी कहते थे, ऋषिता के साथ मुझे काम करने का मौका मिला, तो यही कहते थे कि यार काम करते रहना चाहिए. साथ में काम करते हैं तो फिर मिलना जुलना, बातचीत, चाय, कभी कभी घर पे आना जाना, डिस्कस करना, पैकअप के बाद वैनिटी बैंड में बैठना, इन बिटवीन शॉट्स में बातचीत करना, तो ये दोस्ती कायम रहती है. फिर जब फिल्म ख़त्म होती है या शो ख़त्म होता है, फिर सब अपने अपने रास्ते चले जाते हैं, सब बिज़ी हो जाते हैं. कोई दूसरी फिल्म में काम कर रहा है, कोई दूसरी चीज़ों में बिज़ी हो जाता है. तो मैं हमेशा कहता हूँ कि वो तो यार चलो यार मुझसे स्क्रिप्ट मत लिखाओ, गाने तो लिखवा लो ताकि आपसे मुलाकात चलती रहे. और ऋषिता हमेशा कहते थे कि फिल्म और एक शो एक ऐसा होता है, जब हम कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं तो जैसे हम ट्रेन में जाते थे ना, जैसे बॉम्बे से दिल्ली जाते थे, तो एक ही कंपार्टमेंट में काफ़ी लोग बैठते थे, और सेकंड क्लास में या थर्ड क्लास में जब भी वो जो, तो उनसे दोस्ती हो जाती थी, प्यार मोहब्बत हो जाता था, खाना पीना साथ में होता है, बातचीत होती है. और हम लोग फिर दादर स्टेशन या वीटी स्टेशन जहाँ भी उतरते थे बोलते फिर मिलेंगे. जैसे ट्रेन चली जाती, सब अपने अपने घर चले जाते हैं, और हम एक दूसरे की फिर मिलते नहीं मोस्टली. सो मुझे ऐसा हमेशा लगता है कि काम करते रहना चाहिए साथ में. और मेरी खुशनसीबी है कि काफ़ी लोगों के साथ मैंने बहुत काम किया. काफ़ी डायरेक्टर्स हैं जिनके साथ बहुत सारी फिल्में की हैं, एक्टर्स हैं जिनके साथ मैंने 12-12, 13-13 फिल्में की हैं, हीरोइंस हैं जिनके साथ मैंने 12-12, 13-13 फिल्में की हैं. अभी आदि के साथ मैंने 2 फिल्में की हैं. तो उम्मीद करता हूँ कि इनके साथ और भी काम करूँ, संदीप के साथ और काम करूँ. पता नहीं शोभिता काम करना चाहेगी कि नहीं, पता नहीं. शोभिता मुश्किल है ना. तिलोत्मा को तो आई नो शी विल 100%. एंड रवि तो मेरे जैसे पुराने चावल हैं, काफ़ी साल से ऐसे काम कर रहे हैं, और इनके साथ पहली बार काम किया. इनके डैडी को मैं जानता था, बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे. एंड तो दोस्ती है, काफ़ी लोगों से दोस्ती है, और दोस्ती रहती है. ज़रूरी नहीं होता कि रोज़ मिलना बातचीत करना, मगर हम लोग जब 5 साल या 10 साल या कभी प्रीमियर पे मिलते हैं और कभी कभी पार्टी में मिलते हैं, तो उसी तरह मिलते हैं जैसे कि बहुत अरसे से मिले हुए हैं. एंड ये बिना ट्रस्ट के तो लाइफ ही नहीं है. ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है. आप ट्रस्ट नहीं करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा. जैसे कि मैं जब काम करता हूँ तो मेरे पे संदीप पे मेरा पूरा ट्रस्ट है कि संदीप जो है वो ऐसा, ही इज़ द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म. सो जब वो ओके करता है तो मैंने कितनी बार मॉनिटर पे देखा होगा संदीप, हार्डली. संदीप मुझे बुलाता था कि अनिल आगे देख ले. तो मुझे इतना ट्रस्ट था कि मैं मोस्टली 99.9% मैंने कोई शॉट देखा ही नहीं है. कभी कभार थोड़ा कंटिन्यूटी के लिए या कभी कुछ ज़्यादा अच्छा शॉट दिया तो बोला था यार आगे देख ले. बट यूजली आई नेवर, इतना ट्रस्ट है मुझे संदीप साहब पर. और जैसे हमारे जो चैनल, जो हमारा प्लेटफॉर्म है हॉटस्टार, डिज्नी प्लस, उन पर मुझे पूरा ट्रस्ट है. अब तक मेरी जब पहली बार जब शो शुरू हुआ था उनसे बात हुई, उसके बाद ज़्यादा बात ही नहीं हुई. उन्होंने कहा कि जो उन्होंने किया, उन्होंने जो भी किया शो के लिए अच्छा ही किया होगा. तो मेरे को पूरा ट्रस्ट है कि जो
जो भी आदमी, जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है इस फिल्म के अंदर, उस पर ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है, और बिना ट्रस्ट के फिर वो थोड़ा खटास रह जाती है. तो इट इज़ वेरी नेसेसरी टू ट्रस्ट पीपल हुम यू आर वर्किंग विद. एंड कभी कभी बिट्रेल हो जाती है, वो बहुत कम होता है, और आपको दुख भी होता है. बट मैं इस तरह का इंसान हूँ कि रात गई बात गई, नेक्स्ट डे आई फॉरगेट अबाउट इट एंड आई मूव ऑन एंड आई एम एज वार्म एंड एज फ्रेंडली. मैं चीज़ों को what do I say? I don't really hold on to it. Sobhita is someone who has gone on record to admit that you battled with confidence and esteem issues in the past, you know, as a young girl when you were growing up. What do you tell yourself when you have to play characters that you usually do in your films and shows? Because these are very bold, unabashed, unapologetic women that you portray on screen. But what's your process? What do you tell yourself? How do you bring yourself to that mind space? Actually, the word battle is very strong. Sure, I grew up thinking that, okay, maybe I'm not the coolest kid on the block, and that's okay. I don't think it's so much oh, I was struggling with it, or I was battling confidence issues. I don't think it was so steep. But I guess sometimes some of the things you say, they come out in print sounding way more aggressive. Sure, I was nerdy, and I was a very geeky kid. So for me, I just didn't think that I would naturally belong in this world, because it was just so fantastical. But through the course of my career, 7 years, like you mentioned, I've had the chance to play a variety of parts. Some pretty looking characters, some not, and I think so much is also about connecting with their conflict. When you understand what they're struggling with, or what the character is really dealing with, what are her circumstances, and you focus on that, there's a certain authenticity that comes in. And whatever, and I think I've not always played parts that are supposedly good looking or whatever. And confidence, I think, is not a destination, it's a journey. On some days you feel great, on some days you feel a bit low. Some days I feel like my merit has been validated by some bright minds like you guys, and I feel great. And on some days I'm like, shit, my life is over. I think it's okay, it's a journey. I'm very fortunate that filmmakers put their faith in me, and they give me parts that are as glamorous, as intense. It's really a pleasure. I am not burdened by it. This has really been a privilege. Out of the industry for nearly 4 decades now, and अरे फोर्स से ज़्यादा हो गया, 4 महीने वो 7 दिन में 4 से कैसे हुए? so you have worked in various different forms of entertainment, and now you have also joined the night manager in the OTT space. I just wanted to know, what do you think about the emergence of OTT as a platform, not only for viewers but also for actors and the filmmakers? This is not my first, I've done it almost, कितने साल हो गए भाई? 24 को कितने साल हो गए? 8-9 साल तो हो ही हैं. तो उस वक्त जब किया तो वो डेफिनेटली वाज डन फॉर टेलीविजन, मतलब वो तो ब्रॉडकास्ट हुआ था, और वो OTT पे भी रिलीज हुआ था. सो OTT का सिलसिला और ये जो छोटे पर्दे का सिलसिला, एंड डूइंग एनीथिंग विच द अपॉर्चुनिटी आई गॉट, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि ये OTT के लिए या ये टेलीविजन के लिए या बड़े पर्दे के लिए. मेरे लिए ये है कि जो मेरा डायरेक्टर है, जो राइटर है, जो मेरी ऑडियंस है, उनको खुश होना चाहिए. और मुझे बिल्कुल कोई आई थिंक it's like a renaissance at the moment, it's the best time for all of us कि ये OTT का दौर जो शुरू हुआ है, और जो काम का दौर जो शुरू हुआ है, इतना सारा काम है सबके लिए, और इतना अच्छा काम हो रहा है, और फिल्में भी बनेंगी. एंड मुझे कोई ज़्यादा बस OTT में ये होता है कि जैसे कि मैं शोभिता ही कह रही थी कि कभी कभी OTT में ये एडवांटेज होता है, टेलीविजन पे जो हम लोग बड़े शोज करते हैं जिसमें एपिसोड्स होते हैं, कहानी लंबी होती है, यू गेट मोर अपॉर्चुनिटी टू प्ले द कैरेक्टर इन अ मच मोर, यू कैन make it a little more detailed, and you get more time
to develop your character and for storytelling, and it's great fun. उसका एक अलग ही मज़ा है काम करने का, और कभी-कभी ज़्यादा भी मज़ा आता है, you know, फिल्मों से ज़्यादा मज़ा आता है इसमें काम करने का, मुझे at least. I've enjoyed doing 24 and Night Manager much more than a lot of my films I've done. So गलत लोग मेरे से मत पूछिए सवाल मुझे तो सब सेम लगता है बस जाना है और काम करना है, ये एंटरटेन होना है, चाहे छोटे पर्दे देखो बड़े पर्दे पे देखो. आई जस्ट एज लॉन्ग एज मैं सेट पर रहूँ और काम करता हूँ. पिछले 2 सालों से, कोविड के बाद से स्पेशली, एक ऐसा फेज आया है बॉलीवुड में जहां फिल्में बहुत ज़्यादा नहीं चल रही है, और जो इक्का दुक्का फिल्में चल रही वो भी ऐसी चल रही जो नॉर्मल फिल्में नहीं होती है ना. तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, क्या एक ऐसी चीज़ है जो ऑडियंस थिएटर्स में नहीं जा रही है, और क्यों बहुत ज़्यादा फिल्में फ्लॉप होती जा रही है? तो मैं चाहता हूँ आपका कुछ अगर पॉइंट ऑफ व्यूज पे, कि ऑडियंस का टेस्ट चेंज हुआ है, क्या हुआ है? आई थिंक आई नीड यू आंसर्स फॉर दैट. ठीक, उसी ये मंच जो है नाइट मैनेजर के लिए, तो ये इस पे आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन. तो मैं बिकॉज इतने सालों से काम कर रहा हूँ, और मेरे पिताजी भी इस फिल्म इंडस्ट्री में, तो कम से कम 60 साल हो गए कि मुझे जब से इस फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बातचीत और फिल्में और एक्टर्स और डायरेक्टर्स और चलना ना चलना, ये सिलसिला तो चलता है, काफ़ी सालों से चल रहा है. तो कभी एक पैच आता है जब 2 साल के लिए ऐसी फिल्में नहीं चलती हैं, फिर लोग बोलते हैं कि इंडस्ट्री बंद हो रही है, ये प्रॉब्लम हो रहा है. ये कम से कम मैं ही अपने करियर में 5-6 बार देख चुका हूँ, और ऐसा कभी होता नहीं है, ना होगा. ये जैसे हर इंसान के लाइफ में होता है उतार चढ़ाव, बिजनेस में भी होता है उतार चढ़ाव, और कभी उतार होगा कभी चढ़ाव होगा. एंड तो मैं इसको पॉजिटिव ही लेता हूँ कि क्योंकि इस कोविड के वक्त में मुझे लगता है लोगों ने समझने की कोशिश की है कि और मेहनत करें और अच्छी फिल्में बनाएं, और आने वाली फिल्में देखना बहुत बढ़िया होंगी और अच्छी होंगी, क्योंकि आदमी ज़्यादा सीखता है. जब ऐसे सिचुएशन होती है तो ज़्यादा सीखता है, और जो नहीं सीखेगा वो फिर ही हैज़ टू पे अ प्राइस. बट आई थिंक पीपल हु आर सिंसियर एंड ऑनेस्ट विद देयर वर्क and who know their job, who know their craft, उनके लिए बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है. उनको काम मिलता ही रहेगा और फिल्में चलती रहेंगी, और जब अच्छी फिल्म देंगे तो ऑडियंस आएगी और फिल्म देखेगी, और आपने देखा और आप देखते रहेंगे. We're shooting for Night Manager and Gumrah that year. As an actor, how difficult does it become for you to maintain a different essence of each character, especially when something like a Night Manager, a character over there demands you to have certain nuances? Yeah, I think it's all in the writing, and if you're lucky enough to come upon something that has been written well, I think there's more than enough there to kind of draw from. I think it's also about the choices, and it's up to you to pick things that don't feel very similar as well, which is something I try to do. But I always find that once you get to the heart of it, and if it's written well, you'll always find a different person in there, and it's up to you to be kind of conscious of trying to not make the same choices as an actor, trying to not fall back on the same. We all have a toolbox that we kind of go to when things get tough, and to not kind of resist reaching in for that thing that is tried and tested, even when you're shooting. So it's really about being honest with yourself, being conscious when you're looking at new material, to try and find a new way into it. But yeah, if you're doing your homework and something's well written, you'll always find a new character there. And obviously, if you have the great people to collaborate with, and someone, for example, in this case, it was Sandeep, who had such a clear idea of the world and what he was going for. I think. I think then you make things easier to not kind of repeat yourself. And I think somewhere, if I can add, when you see something good when you see such a good team and good, everything is positive, आपको एक sense तो हो जाता है, तो फिर आप ज़्यादा मेहनत करते हैं. If you don't, and there are certain times people don't take this opportunity, and they miss out on this opportunity. So I feel everybody got this opportunity in this film, in this show, and they've grabbed it with both hands and did their best to their capacity.
And now it's up to you all to decide कि जो हमने कोशिश की है और दिल से किया, क्योंकि चीज़ अच्छी थी और क्योंकि अच्छी थी तो सबने दिल से काम किया, सबने अपना आज मतलब कि you know we all are here because we are proud of what we have done, we are happy with what we have done. Otherwise, you know, why should इतने सब इकट्ठे होते नहीं हैं? Very very tough. Today everybody is very busy, everybody has got so much to do. But when you know that you've done something really special, at least what you feel, what actually we feel, and we've done it with a lot of purity and a lot of honesty, with all this, you know, क्योंकि इंटरनेशनल शो है तो एक्सपेक्टेशंस हैं, उसके साथ उसको कंपेयर करेंगे, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसा ना हो कि लोग बोले नहीं यार उन्होंने बहुत अच्छा किया और आपने नहीं किया. सो वी वर्क इवन हार्डर. हमारे पास वो बजट्स हैं नहीं, you know, the kind of budgets. And of course, over there the actors are definitely very, they're so well trained. The training over there is unbelievable. All the theatre actors, all have done courses and are brilliant actors like you, Laurie, and Tom. They both absolutely very seasoned theatre actors. You know, done a lot of theatre, done a lot of work. You must have seen them only in these kind of films, but उन्होंने बरसों से काम कर रहे हैं उन लोग, बहुत काम किया उन्होंने, and including the she's an Oscar winner, you know, and look at, you know, you're getting into her shoes. It's not so easy. Then of course Sandeep is the director. She's also an Oscar winner. Susanna, you know, and of course she's won an Oscar, and so. डर तो लगता है यार, इन लोग सब ने किया और अभी यहाँ हमको जूते नहीं पड़ जाएंगे, you know. And when people come and say that, there are a lot of people who come and they've said that it's on par, or some people obviously they're ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं, don't take them so seriously, यार उससे better भी है. A lot of people have said that also कि यार ये थोड़ा एक चीज़ें उसमें हैं जो हमने ज़्यादा कनेक्ट किया है इसके साथ, you know, इस शो के लिए. That makes you feel good. So that's what it is, and I think that's what the reason he says hard. You know, he's really worked hard. I you know, and I could see his dedication and his honesty, and he was so earnest, and he, you know, कि जो मेरा capacity में अपना best देता हूँ, you know, I'll do my best, and of course there's a lot of room of improvement for all of us. कि we in future will do even better work, and whatever the opportunity got, we all have tried to do, you know, our best, and I can say that about Aditya and Sobhita के बारे में क्या बोलूँ, वो तो मैं बहुत तारीफ कर ही चुका हूँ उनके बारे में. हाँ. Yeah, I think with you try and I mean, imagination is always required to kind of push yourself to see what is possible. I mean, part of the joy of acting is kind of the preparation. For me, I love the prep that goes into everything to kind of figure out beforehand what the possibilities are. So yeah, I think Anil sir, you had a larger leap of imagination, because I think arms dealers don't roam around Bandra Jew area that often. But I was lucky enough to find a night manager that I could shadow for a while, understand that headspace a bit. My dad was in the army years ago. I picked his brain about what that life is like, and somehow over the course of my life that's always seeped into me from his stories of his past. So yes, I think the imagination is there in every role. You always try and push to see how you can shake yourself free of the things that you've always done and find something new. But I think Anil sir will have more interesting stories about the arms. Yeah, of course. You see, I want to repeat it again, that of course, first is the great book, fantastic international show, phenomenal writing, Sandeep, Priyanka, all the actors, co-actors, terrific. Couldn't have asked for anything better. And then of course, then I dived into the, that how will I be able, that now ये सब तो हो गया. अब हमें खुद काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी. And then of course I started working. So everybody has got his own way of, building his the character, emotionally, spiritually, physically, his voice, his body language.
तो वो धीरे धीरे उसको टाइम लगता है, उसको वक्त लगता है। रात को नींद नहीं आती, रात को सपने में आता है, फिर आप एक बार पढ़ते हो, फिर 200 बार पढ़ते हो, 300 बार पढ़ते हैं, फिर आप उसको बैठ के वही लाइंस को मैं लिखता हूँ, फिर मैं मांझता हूँ उसको, फिर मैं उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग करता हूँ, फिर मैं राइटर को भेजता हूँ, फिर मैं डायरेक्टर को भेजता हूँ, फिर उन लोग मेरी आवाज़ सुनते हैं, फिर बोलते हैं ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, फिर मैं फिल्में देखता हूँ, फिर मैं सोचता हूँ, फिर इमेजिन करता हूँ, and it's a process which just goes on and on and on, and it's as Tilotma said, it's so much fun, and that's what we live for, and that gives us जो खुशी, what is your what do you do to de-stress yourself? And I feel for me acting is my biggest distress. अगर मुझे de-stress करना है, मुझे खुश होना है, मुझे I want to look my best, I want to feel my best, मुझसे एक्टिंग करवा लो, उससे उसके ऊपर काम, उसके बारे में बात करा दो, कुछ मुझे किसी की परफॉर्मेंस देख लो। तो इसके इर्द गिर्द जितने लोगों ने काम किया था, इस किस्म का काम, इस किस्म की बॉडी लैंग्वेज, इस किस्म कहीं दूर से भी, तो मैं जहाँ से भी कहीं दुनिया की कोई भी फिल्म है कोशिश करता हूँ कि मैं देख सकूँ। और आजकल तो हम जब हमने करियर शुरू किया तो हमको पुणे जाना पड़ता था फिल्में देखने के लिए, बिकॉज there was the archives. We used to go there and watch all the great films of Kurosawa and Ray Saab and all those films, because they were not really available. But today everything is available on the tip of the finger. You can do a lot of research, and that's the reason you can see such phenomenal work today of all the actors, Indian actors. They are on par with all the world-class actors, and of course I was unfortunate that I couldn't do much of theatre. And that's my only regret कि मैं थिएटर नहीं कर सका। मैंने मेरे ख्याल से 2 प्ले किए हैं, काश मैं और प्लेस कर सकता, because that also is a great experience to be live in front of the audience and perform in front of them. So that's one of my bucket list कि मेरी दोस्ती जो फिरोज अब्बास खान से भी हुई थी, हमने फिल्म बनाई गांधी माँ फादर, पर हमारी दोस्ती इसलिए होती कि हम प्ले करना चाह रहे थे एक साथ में, मगर वो प्ले तो रह गया। मगर so these are the things you keep on doing. So कभी-कभी you do a role, you prep it like a play. There's theater में कैसे करेंगे आप? तो बोलते रहो, फिर वो जब lines, character, उसको फिर भूल जाओ जब set पर आते हैं। फिर director, you become like a clay and you go and surrender yourself to the director, and the director molds you the way he wants it. And then because you have prepped so much, then आपको वो जहाँ लेके जाना चाहता है वो ले जा सकता है। उतार नीचे ले जाओ, थोड़ा अंडर प्ले करो, थोड़ा लाउड करो, थोड़ा ऐसा करो, थोड़ा ऐसी लाइंस बोलो, ऐसी बॉडी लैंग्वेज करो, इसके साथ ऐसा रिएक्ट करो, ये इसका कैरेक्टर, इसके साथ आप ऐसे बात नहीं कर सकते हैं। तो इसमें इट्स लाइक एन ओशन, आई कैन गो ऑन एंड गो ऑन एंड ऑन, बट एवरीबडी हैज डिफरेंट वेज ऑफ getting life into something which has been written in words, to get it to look, and people can relate and empathize with that character. Either they hate him or like him or love him or whatever it is. So it's and then sometimes you're blessed with certain face, you're blessed with certain eyes, you're blessed with certain voice. कभी आपकी आवाज़ कमज़ोर है तो आप अपने आवाज़ पे काम करते हैं। आपकी आंखें छोटी हैं, जैसे मेरी आंखें छोटी थी तो कैसे एक्सप्रेस करूँगा, मेरे बाल बहुत ज़्यादा थे, बॉडी लैंग्वेज कितनी चीज़ें थी, बॉडी ज़बरदस्त नहीं थी। So you just keep on working on all your minus points and try to improve yourself as much as you can. So it's I don't think one lifetime is enough for me to really, really be able to do. There's so much to be done, so much to learn, and so much to look forward to in my life. Yeah. Certain roles, yes, need a lot of prep, and something which some roles which are completely opposite to your personality. Right. Because in real life I am not that overconfident, I am not that flamboyant, I am not so power hungry, I am not that I will go to any extent to achieve what I have to achieve. It's completely opposite to my. I am very, very people's person. I am quite as people say, I try to laugh a lot, smile a lot, energy, positivity,
एंड इट्स कम्प्लीटली ऑपोजिट टू माई पर्सनैलिटी. तो मुझे अपने आप को बहुत कुछ रोल्स ऐसे होते हैं जिसमें मुझे बहुत रिस्ट्रेन करना पड़ता है. आई हैव टू बी वेरी अंडरस्टेटेड, वेरी लो की. So for that, sometimes it becomes little, I have to prep for it so that I'm very, very calm from inside, mentally and physically and spiritually, for me to project that kind of body language and demeanor. And कुछ रोल्स ऐसे भी होते हैं जो which are very much the way I am. So उसके लिए फिर वो इतना prep नहीं होता है. तो I just somewhere there's some roles there where I just be myself and I do it and I have a lot of fun. Not that that is also easy because so different roles have, जब मैं ईश्वर I had to prep a lot, when I did ईश्वर. When I did लम्हे I had to really I'm not that kind of person what I played in लम्हे. और बेसिकली जो फिल्में मुझे याद आ रही हैं, आसानी से मशाल जो था, it came very natural to me because मैं चंबू का था. I am brought up in that kind of an atmosphere of delinquents which were around me, and the kind of kids I've grown up with those kids. So I was very fortunate that early in my career I got those kind of roles which were very much it came very easy to me. Mashal, Andar Bahar, Karma, these kind of films, and people liked me in those characters. And then slowly suddenly, like Wo Saat Din, Beta, these kind of films, Mr. India, were very not. I have to put in a lot of thought to it. And then of course, more important that when I get these kind of films, the writing and direction, director कौन है और writing क्या है, that is very, very important. So मेरी पूरी responsibility है. I become more comfortable when these kind of uncomfortable roles come to me, but the director has that wisdom and experience, and he knows what he wants. So then I trust him and I do it. So I'm very careful when these kind of films are offered to me. I remember when वो सात दिन released, राज साहब ने कहा था, तो he saw the film, he liked my work a lot in वो सात दिन, and बोलो तू ऐसी फिल्में किया कर, ऐसा तो रोल कोई कर नहीं रहा, these kind of roles. तो मैंने राज अंकल को कहा कि I said you were very fortunate, and other directors, and there were such great writers and filmmakers who were making those kind of films, a very selfless, good man, nice man, a decent man, who is totally selfless, innocent. To get that kind of innocence and that kind of purity, you need certain kind of director. Like when I did with K. Vishwanath, I did Ishwar, I was just following him. And I did वो साथ में बापू साहब, I did शेखर के साथ मैंने मिस्टर इंडिया किए. तो उसमें उनमें खुद में एक बचपना है, एक मासूमियत है उन डायरेक्टर्स में. जावेद साहब, when he is like a kid, he's got a sense of humor. The way he wrote it, so it became very easy. Now Subhashji is a very fun-loving, very flamboyant, has got a certain kind of body language, he loves music, he's larger than life. So I did those kind of roles with him, so I could follow him and imitate him and do those kind of films. और मेरी तारीफ हुई उनकी वजह से, उनके डायरेक्शन की वजह से I could do those kind of roles. So I've been, different preps होते हैं for certain roles and certain films. But once we have a great filmmaker behind it, or a good filmmaker and good writing, then half or 70% of your battle is won. And then you just have to put in, you just have to work as much as you can, but the director takes care of you. So I'm basically a director's actor. So the prep depends on whom I'm working with, what role it is, from film to film. Yeah. क्या बात है, बोलो. अनिल को बोलो थोड़ा. फोटोग्राफर है. आदित्य सर. Sobhita, here, center, wait. Now you are right side. यहाँ पे. Sobhita ji, one more left side. अनिल सर के साथ. अनिल सर एक साथ में. Center. Sir, left में. Left. Sir, you are right side. Center, please. Anil sir.
your right side. Nice जोड़ी. अरे लवली बोलो. आओ दोस्ती कर लेना.